Hello, beautiful people. Welcome to Chili Together. Today we are going to Alibag for some work. Let's try the Roro first time. So we have taken our bike and we are going. We are already into the Roro and we are going to experience this first time. So how's the trip? Stick to the journey till we reach Alibag. क्या बात है, इतना परफेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 8 बजे मतलब 8 बजते ही रोरो यहाँ से निकल चुका है। एंड लेट्स सी अभी कितने टाइम में ये अलीबाग पहुँचता है। अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 आवर मे बी, मेरे को पता नहीं है। चलिए देखते हैं। So finally we have reached Alibag and this has taken us 1 hour 5 to 10 minutes approximately, and you can just look ahead. You can say we will be touching there another 5 minutes. तो टिके रहिए, देखिए अलीबाग में हम क्या मज़ा करने वाले हैं अभी। चलिए। Start. All right. Hello, okay. No, don't. Hello, beautiful people. Today we are at Alibag, and unfortunately we have missed our Roro just by 3 minutes. So our Roro was scheduled at 1:20, and we reached by 1:23. So we have missed it. So now we came back to the city, and we thought that we'll enjoy the day in Alibag today. तो आज हम लंच करने आए हैं और लंच हमने किया है सनमान रेस्टोरेंट में, जो कि अलीबाग सिटी का जो एसटी स्टैंड है वहाँ पे मेन एसटी स्टैंड के बहुत नज़दीक है। अगर आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बिकॉज़ हम अलीबाग में हैं और अगर हम सी फूड ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, राइट। तो अब जब हम यहाँ पहुँच गए तो हम आए हैं सनमान रेस्टोरेंट में, जो कि स्पेशलाइज़ करता है गोमांतक फूड में। एंड आज हमने ऑर्डर किया है फ़िश थाली। तो इसके अंदर आपको सोल करी, दिस इज़ अ थिन टोमेटो ग्रेवी। ये फ़िश का सुक्कट जो होता है वो है, ये इसका ग्रेवी है। ये फ़िश करी है पॉम्फ्रेट का, और राइस एंड फ़िश। एंड यू गेट ईदर, यू हैव अ चॉइस टू ईट विद चपाती और भाकरी। तो मैंने लिया है राइस भाकरी, एंड देन यू गेट द अनियन सैलेड। तो ये रहा हमारा फ़िश थाली। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड या बिफोर आई टॉक अबाउट इट, ये पूरी थाली जो है वो मुझे पड़ी है 400 रुपीज़ में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। चीयर्स। So I think I'll go with the sukkot first. Quite fishy, not very spicy. It is very spicy. Okay. You know what? I just wanted to taste the fish curry.
and rice. This is just extra that I got. This curry is very nice. The fish curry. Let's see the size of the pomfret that is. So you get this kind of a pomfret size. Yeah, and this entire bowl of curry. So, considering the price of each dish in their menu is approximately 200 to 250. So giving a thali entirely for 400, it's quite a good deal. The taste is nice for Gomantak. Let's taste the fish. Oh, it's very hot. Quite a good size of fish, I must say. The fish is really fresh. It is really fresh. Okay, this curry is actually coconut, and coconut curry is very spicy and tangy, really very nice. Quite Gomantak. Now let's go for this. I am really intrigued as to what exactly this is. Yeah. So let's figure it out. This is I think this is plain curry type. Thoda, like, it's very thin. Now let's try it. Yeah, tangy. I think imli डाला हुआ है इसमें, but I don't know exactly what it is. Okay, तो ये है ना, ये अभी हम लोग ने वेटर से थोड़ा पूछा. ये तिखट रसा है, तो it's pretty tangy, spicy. Fish का रसा है, so you don't get fish with it, but उसका gravy type है. Nice to have it with rice, but thin, very thin consistency. And now is the time for soul curry, my favorite. It's nice. Okay, could have been better. Okay, overall, if I want to rate this thali, I have eaten better thali than this. I would give it a 7. 7 for rupees 400. I mean, could have been better, but overall, okay. I mean, just if you're hungry, you would definitely like it. I give this curry a 8, but other than that, I mean, I think a 7 is okay to go with. Now, if you like this content, do like, share, comment, and subscribe to my channel. Till then, tata ciao. You can check out the roads of Alibag. This seems to be better than Mumbai. I think Mumbai को तो 10 साल और पिछड़ा होगा, खाली रोड्स करने के लिए जाएगा. मुंबई के रोड पे पता नहीं चलता है गटर किधर है, खड्डा किधर है, किधर भी आदमी गिर जाएगा मालूम नहीं.